संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं अमित अग्रवाल अंकल को। अंकल, आप प्लीज आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में लख लख प्रणाम। प्यारी संगत को नमस्कार। मैं गुरु जी से प्रार्थना कर रहा था कि गुरु जी प्लीज गाइड व्हाट सत्संग्स यू विश आई शुड शेयर, so I will try to follow his guidance. As Sangat ji, you all know that satsang are truthful experiences and learnings which Guruji has given us, and it always has some kind of messages or communications for somebody. So my satsang I'll divide it into two parts. पहले जो जब गुरुजी बॉडी में थे, when I met him in 2002-2003, and so those experiences and learnings. And the second part when Guruji took Mahasamadhi. So there were tremendous learnings and experiences thereafter. So I used to work abroad. I was in Canada, and I had returned home when my mom took me to Guruji somewhere in 2002-2003. So I went to Empire State, and there was Sangat going on, and there were lots of high-fly people, as in they were very popular personalities. And when I looked at Guruji, I did not find him saintly. He wore a very, very dashing chola, very, very attractive. He was looking very attractive. He looked more like a villain from a movie to me that time. That was my initial perception. So I had a very negative perception of Guruji when I first looked at him. I did not find him saintly at all. I had come from abroad, and I guess the Western education or the outside world does that to you. I saw 4 people eating from one thali. So first thought which came to my mind was, I hope isko kha ke bimar na pad jaye, you know. So there was a lineup. Guruji Empire State mein baithte the, and people would line up to take his blessings. So mummy took me to him, and like everybody in the line, I came to Guruji, and मम्मी ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी ये मेरा बेटा है, and गुरुजी ने हाथ से जल्दी से नमस्ते किया, and that was it. That was my 3, 4, 5 seconds interaction with Guruji. So after coming back home, I had a lot of curiosity in my mind, and I was really thinking, is he really having powers? Is he really saintly, and is he a Sadguru? So I wanted to देखिए, ये भी गुरु जगाते हैं आपके दिल में, ये एक आत्मिक क्यूरोसिटी होती है, which is, it was not my curiosity, it was something which he instilled in my heart, and I became curious. And to test Guruji, after many days, I thinking that he will not recognize me, he will not know who I am, since I was nobody famous. मैं एम्पायर स्टेट अकेला गया, जस्ट टू टेस्ट गुरुजी कि गुरुजी मुझे पहचानेंगे,
and will he know anything about me since I am nobody popular? Anyway, Sangatji, Sangat was happening, and constant thought in my mind was the same, that Guruji will not recognize me. And towards the end of the Sangat, गुरुजी ने हाथ से इशारा किया मेरी तरफ देख के और पंजाबी में बोला आई. And I did not understand Punjabi very well, but I could understand that he is calling me. So I went to Guruji. I went close to Guruji, and then he quickly said, "Jain," and I bowed to him and I started to leave. And Guruji ने जोर से बोला, "ठहरें." So I could hear very loudly. And then Guruji के पास एक अंकल बैठे हुए उनके चरण दबा रहे थे. And गुरुजी ने अंकल को लाउडली कहा, सो आई कुड ऑल्सो हियर कि अंकल तेनू पता है अग्रवाल दा मुंडा है, बहुत चंगा मुंडा है, कैनेडा विच घर है, सैनी फार्म दे रहिंदा है. And he narrated my entire kind of a biodata. So it was very shocking to me, obviously, because this was exactly what I came to test him about, that he will not recognize me. And here Guruji ने मेरे बारे में सब कुछ, including my name, he narrated everything. So Sangatji, this was the beginning of my education. This was the beginning of the education which Guruji imparted. And I realized that this is that Guruji is not us. I realized that he has some powers. Although I came back home and I asked my mother again, because इंसान होता है, इंसान डाउट करता रहता है हर समय. And I asked my mother कि आपने कभी गुरुजी की को बताया है मेरे बारे में? So mom said कि गुरुजी ज्यादा बात नहीं करते, and the only thing people know is that you are abroad. That's all. So and Sangatji, from this point onwards, Guruji read my mind continuously to the most personal thoughts, which only I know. Putting all my doubts and questions to rest कि भाई मैं सब जानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ. And I realize that he has supernatural powers. He is not an ordinary person. So this is how kind of that divine education, जो ज्ञान था वो गुरुजी ने हमको देना शुरू किया. Then so I'll share what Guruji wants me to. And गुरुजी बहुत सत्संग सुनवाते थे in Empire State. And I happened to hear I guess a couple. And I realized, listening to those satsangs, the purity with which the Sangat was expressing the जिसे कहते हैं कि आत्मा से जो आवाज निकलती है और उसका अलग ही एक इम्पैक्ट होता है एंड सच्चाई होती है. So I could really feel as a somebody new to understanding Guruji or learning about divinity. It was so pure about the blessings that Sangat received, whether it was a medical cure or a suffering or so anything. It was so pure, as in it touched my soul and heart to an extent that I realized that this is not an ordinary guru, and this is definitely divinity. So that further kind of created that bond and faith जो कि हम डिजर्व नहीं करते, लेकिन गुरु आपको वो देते हैं. It is a part of that divine knowledge which he imparts.
So uh, this kind of further made me closer to understanding Guruji and to try to follow him. You know, somewhere in 2005, I had a trip to Germany, and I'm sharing this kind of a medical thing. Guruji ने मुझे ये बोला है, you share these as much as the medical satsangs as much as possible. So 2005 में Germany, I had to attend a fair, and I checked into a hotel, and I was taking a bath, and I realized that I have a very big boil on my bottom, and boil भी इतना बड़ा कि like a big chana, like सफेद चना जो होता है ना, उससे भी maybe slightly bigger than that, and it was very painful, and it was at a place where it would make me it would make walking very difficult for me. और as you know कि exhibition में तो आपको, if you are attending an exhibition, then you have to walk, and you have to see what are the things around. So I kind of made an effort and did a few hours of walking, but I realized that I am unable to do that, and I was really in a lot of pain and suffering. So I called up my family, and मैंने उनको बताया जी इस तरह से मेरी कंडीशन है और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा. और so my family told me to connect with one of our cousins who was based in Germany, and so I called them instantly, and they told me to come over and to seek some medical kind of consultation with a doctor. So ji, I went to them, and they were wonderful enough to take me to a doctor, and to a German doctor, and went there. He examined, and he said, let's put an ointment and we'll see. So ji, ointment lagaya, and no improvements, nothing happened. Same painful, and I was suffering. So at the end of it all, I we decided that I should go back home and take a treatment. So I cut short my trip, and I immediately came back home. Sangat ji, obviously, family took me to the doctor, to one doctor, and the first doctor said जी, एग्जामिन किया उन्होंने कहा जी ये तो ट्यूमर है और फैल जाएगा, एंड इसका इमीडिएटली ऑपरेशन करना चाहिए. So anyway, we seeked a second opinion and went to another doctor. उन्होंने कहा जी ऑइंटमेंट लगा लीजिए, क्रीम लगा लीजिए, ऑइंटमेंट लगा लीजिए. So anyway, उसी दिन हम लोग शाम को I went to Empire State to see Guruji, and I was thinking in my mind कि यार बड़ी awkward situation है, कैसे गुरुजी को express करें. It's very odd, but anyway, so I was in the line to meet Guruji at Empire State, and मैंने गुरुजी के सामने आए, गुरुजी से कहा, गुरुजी बैक में बस इतना बोला, गुरुजी बैक में, and I don't remember if I even said the word boil. मेरे को लगता है सिर्फ गुरुजी बैक में, और गुरुजी ने मेरे को एकदम से काटा और बोला करेले का जूस पियो. गुरुजी बड़ी तेजी से बोलते थे, तो करेले का जूस पियो. So I, for a second, I didn't even understand कि क्या गुरुजी ने मेरी बात समझ ली, that he told me to have करेले का juice. But you see, that was obviously my foolishness, since Guruji knows everything. And so anyway, Sangaji, for 3-4 days, I had karele ka juice, and everything was gone. That so-called tumor jo back mein tha, that was gone. So Guruji is, I think if there is any cure on this earth, Guruji and
Lord Shiva, who's Guruji, who's incarnate, who's a reincarnate of Mahashiv himself. So he's it. I cannot emphasize this enough. So that is once. And another incident which I want to highlight is एक बार थोड़ा जोश चढ़ा मुझे कि I wanted to do self purification. तो इंसान के जो 5 evils होते हैं, काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार. So I was working on myself. I started working on myself, and संगत जी अभी 15-20 दिन हुए होंगे. I was trying to implement this in my life. And आप देखो कैसे हमारे गुरुजी कितने, मतलब I don't have words, but I would say he is so loving, and he when I met him at Empire State, so he said to me, "Kun tu insan ban raha hai, kun tu insan ban raha hai. Now you are becoming a human being." So what I want to highlight is that Guruji knows everything, and he knew it then, and he knows it now. So one should never think that something is not known, something about you or in your life or anybody's life is not known to Guruji. Everything is known to Guruji. Whatever anybody thinks, whatever anybody does, whatever anybody speaks, it goes through him, wherever, whenever. So just trying to see what else. Okay, in 2006, I think, sometime, I don't remember the exact date, Guru Empire State में kitchen के बाहर एक there is a elevated desk side shelf होता था. I think I have not been to Empire State for a few days, so I don't remember अभी भी है कि नहीं. But kitchen के left side पे एक shelf होता था, and Guruji used to sit on that. I think post his walk, or he would be in shoes, or so he would just sit on that. So one day I had happened to go slightly before the Sangat, and so I just stood beside him, and Guruji ने ठेठ पंजाबी में मुझे कहा, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. Then he continued to say, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. So I was like thinking कि मैंने कहा अच्छा गुरुजी, so I didn't understand कि गुरुजी मुझे क्यों बोल रहे हैं, so obviously मेरे को उस समय कोई medical problem नहीं थी. So obviously I could not understand कि why Guruji is telling me this. And so basically in English it means that, do you know that doctors spoiled someone's heart in सैनिक फार्म. He said, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. So since I live in Sainik Farm, so he was telling me about Sainik Farm and somebody's heart being spoiled by doctors. And obviously doctor ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, so that doctors know nothing basically. So anyway, सुन लिया हमने, and the matter got over there. And so this was just 2 statements he made while I interacted with him. बात आई गई हो गई, खत्म हो गई बात. And then I will connect this with ये satsang है. It continues on after Guruji took Mahasamadhi. So that's how it connects. And then I will आपको समझ में आ जाएगा कि गुरुजी ने पहले से ही देख लिया था कि
what I am going to go through. And so he had already forecasted or guided me to take some right actions post his or after his Mahasamadhi. Anyway, बात खत्म हो गई जी. अब now I'm just wondering, should I what others I think I should share. Um, 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 so then okay, I'll share one more satsang about 2006, I think, about my activity in Sri Lanka. So in 2006, I was involved in a manufacturing operation of aluminum alloys in Sri Lanka, where we had a factory, and I had put Guruji's photograph on the production floor. तो वहाँ पे हम लोग we were making aluminum alloys for the auto industry in India, and we were importing a lot of aluminum materials from all over the world, and which were primarily called scraps, and we were alloying them based on their chemistry and then shipping it to people like TVS and all other auto companies. So anyway जी, तो the point is कि वहाँ पे हम लोग alloying कर रहे थे, and हमारे मैनेजर ने chemistry देख के he asked the floor people to charge certain aluminum materials into the aluminum, like there is a furnace which is basically used for melting, and it kind of melts the material at a 900 plus degree centigrade. So 900 degree centigrade is like 9 times the boiling point of water, you know, so very high temperature. So उन्होंने कुछ मटेरियल जो कि किसी कंट्री से आया हुआ था उसको उसमें चार्ज करने के लिए वर्कर्स को बोला, एंड वर्कर्स ने वो जो मटेरियल था दैट वाज बेसिकली एन एल्यूमिनियम मटेरियल, बट उस मटेरियल के अंदर थे एक्चुअली लाइव रॉकेट्स, सो लाइव बॉम्ब्स बेसिकली. सो कि जो कि बिकॉज ऑफ सम नेग्लिजेंस ऑफ ऑब्वियसली कस्टम्स वो आ गए थे, एंड हमारे पास वो एज used aluminum scrap वो आ गया था. So anyway, so these workers, they charged that material into the 900 degree hot furnace, and वो जो है obviously वो blast हो गया furnace के अंदर, and there were about 100 or so approximately workers on the floor, on the production floor. And आप इमेजिन कर सकते हैं कि भाई वो जो ब्लास्ट हुआ, सो नाउ द मोल्टन जिसे कहते हैं पिघला हुआ एल्यूमिनियम इज फ्लाइंग लाइक वेपर्स, एंड वो किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, किसी का सिर खुल गया, मतलब वेरी वेरी सीरियस इंजरीज टू वर्कर्स हैपेंड एज अ रिजल्ट कि वर्कर्स many workers have to be hospitalized and were sent to ICU. You see, so they received very fatal injuries, and बहुत बड़ा शोर मच गया. It became a national news in Sri Lanka, and हमारा न्यूज़पेपर में ऐसे आ गया कि इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बॉम्ब्स फॉर LTTE. उस समय एक LTTE ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, इट वाज अ एंटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो न्यूज आ गया कि इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बॉम्ब्स फॉर LTT. तो आर्मी केम इन एंड पुलिस एंड द बॉम्ब स्क्वाड एंड दे सील्ड अवर फैक्ट्री. सो जी एनीवे सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए, और हमारा ये फैक्ट्री हमने सेटअप करी थी यूजिंग बैंक लोन्स एंड फंडिंग फ्रॉम SBI. तो orders are cancelled, everything is cancelled. We had put in a lot of our money, we had taken loans from SBI,
तो लिटरली आपका सब कुछ इसमें, हमारा सब कुछ इसमें लगा हुआ था। एंड कंपनी ने ऑब्वियसली ऑर्डर गॉट कैंसिल्ड सिंस एवरीथिंग वाज सील्ड। एंड वर्कर्स ने बाहर जो है फैक्ट्री के धरना देना शुरू कर दिया कि ऑब्वियसली कंपनसेशन एंड ऑल टाइप ऑफ डिमांड्स एंड इंजरी एंड स्टफ लाइक दैट। और हमारे को इंश्योरेंस कंपनी जो थी, उन्होंने हमारा इंश्योरेंस जो कंपनी, सब एवरीथिंग वाज इंश्योर्ड, वो उन्होंने जो है कैंसिल कर दिया सिंस bombs were not covered in the insurance. Other things were like theft, fire, etc. वो सब कवर होता है, not bombs. So उन्होंने कहा जी your insurance will not be provided and it is not covered. So मतलब in the nutshell आप ये समझिए कि हम लोग लिटरली वी वर ऑन रोड्स एक्चुअली। और एक हमारे अभी कंसल्टेड, मी एंड माय फादर वर डायरेक्टर्स एंड वी वर इन इंडिया दैट टाइम। तो हम लोगों ने लॉयर से कांटेक्ट किया, तो लॉयर ने कहा जी अगर एक भी बंदा वहां पे मर गया इन द आईसीयू, देन यू बोथ आर गोइंग टू बी बिहाइंड बार्स। सो सो वी वर वेरी स्केयर्ड। एंड हम लोग दिल्ली में ही बैठे रहे और फोन पे ही वी वर ट्राइंग टू सॉल्व और काइंड ऑफ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते रहे। और मतलब देयर वर ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, वी आर लिटरली ऑन रोड्स नाउ इन एवरी विच वे, वी आर स्टक एंड लिटरली देयर इज नो वे आउट। सो परेशानी थी बहुत ज्यादा ऑब्वियसली। एंड वी वर एज अ फैमिली वर वेरी डिस्टर्ब्ड एंड वेरी वेरी डिमोरलाइज्ड। एंड मैं गुरुजी के पास गया एम्पायर स्टेट में, और मैंने गुरुजी को जाके बोला गुरुजी श्रीलंका। सो माय वर्ड वाज गुरुजी श्रीलंका। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और मुझे जोर से डांट लगाई। गुरुजी ने कहा तेनू पता नहीं गुरु नाल दस देनी। सो मेरे को, मैं एक मिनट के लिए आई वाज शॉक्ड कि ये क्या हुआ। और फिर मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा अंदर। बट देन गुरुजी सेड एनु चाय प्रसाद पिलाओ। सो सेवादार चाय प्रसाद लाए। आई हैड चाय प्रसाद एंड आई फेल्ट वेरी पीसफुल, वेरी वेरी पीसफुल। ऐसे लगा कि सब कुछ गायब ही हो गया दिमाग से। मतलब आई बिकेम सो काइंड ऑफ सो संगत जी, फॉर इन द फॉलोइंग डेज, उसके बाद आप ये देखिए कि फादर ने कहा यार बहुत हो गया, नाउ आई वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एंड जो है वो ही विजिटेड श्रीलंका। तो सबसे पहले वो हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिले। डॉक्टर, आईसीयू डॉक्टर से ही इंटरेक्टेड। सो द डॉक्टर सेड कि जी पूरे उन्होंने अपने करियर में, डॉक्टर द आईसीयू डॉक्टर, उन्होंने कभी नहीं देखा कि द पेशेंट्स वर सो बैडली इंजर्ड एंड दे आर नॉट डाइंग, सो मतलब ही वाज सरप्राइज्ड कि जी ये क्या हो रहा है, कि आई डोंट अंडरस्टैंड दैट दे आर सो बैडली इंजर्ड बट दे आर नॉट, नोबडी हैज डाइड सो फार। अच्छा जी, सो ऑब्वियसली इट इज मतलब इट इज नोबडी बट गुरुजी हु इज सेविंग अस बेसिकली। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्कर कंपनसेशन, जो कि करोड़ों रुपए में, करोड़ों रुपए का मतलब अमाउंट आ रहा था वर्कर कंपनसेशन का। सो लेबर इंस्पेक्टर से फादर ने इंटरेक्ट किया और ओवर अ कैजुअल इवनिंग इंटरेक्शन उन्होंने फादर को ऐसे बोला कि जी अगर मैं आपका जो करोड़ों रुपए का जो एक क्लेम आ रहा है इसको 10% में सेटल कर दूं, हाउ विल दैट बी? सो माय फादर thought that he is totally illogical, and he says okay, if that's what you think, so be it. So Sangat ji, that claim which was in a large amount of money got settled in 10% of the amount, as the inspector had said, to our shock actually. अब हमारी जो इंश्योरेंस रिजेक्ट हो गई थी वो
So my mother just told my father कि आप एक बार और try करो insurance का. So my father went to the office and my father asked them कि भाई क्या करना है. So they said obviously it is rejected since bombs are not covered. So you don't qualify. So please don't think about it. My father is coming down from the office and he gets a call, and call में there is a surveyor who's calling, and he said that he my father explained to him कि this is the situation, and the surveyor said अच्छा जी आए मैं आपसे मिल लेता हूँ. So he came and met, and then he went to see the factory, and after that interaction he said जी कि आपका केस जेन्युइन है, so I will try to help you, so we will make a re-application. उन्होंने re-application बनाई, and संगत जी the entire insurance was given to us. 100% insurance was kind of passed by the company which had rejected the insurance earlier. So totally beyond intelligence, totally beyond logic. So not only that Guruji saved us from going behind bars, he also saved us from coming on roads actually. So गुरु का तो कोई जैसे कहते हैं ना कि मतलब I guess we are indebted, not in this life, but I guess I don't know how many lives even it is less if we cannot kind of pay back the debt is put on our soul, I guess. So anyway, so इसमें बेसिकली सबसे बड़ी लर्निंग जो गुरुजी ने दी वो यही एक दी कि भाई गुरु को बता के उसकी इंसल्ट मत करो. Like a fool I went to Guruji and I am trying to tell him what is happening, and so बिन बोलिए सब कुछ जानदा. So this is absolute truth, and so something to remember actually. Okay, I'll pass on this part and then I'll share one more. I think what else I'm just thinking. Guruji ki, when Guruji ki fragrance, as we all know, कि Guruji ki Empire State में जब हम Guruji used to wear socks. I saw him many times wearing socks, and when हम लोग आज्ञा लेते थे तो उनके socks के ऊपर हम हाथ कई बार we could touch his socks and his feet. So when हम अपने palms को smell करते थे, that there was a divine fragrance of Guruji which kept on coming, and it kept on coming even after the hands were washed. So this is divinity, as in this is pure divinity. पहले तो मैं सोचता था कि पता नहीं गुरुजी इतर लगाते हैं. This is in the beginning, and obviously then I learned that it is not like that. So हम मूर्ख हैं, so I guess the learning goes on. So anyway, what else I can आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि my mom was always very spiritual. So मैं उनको देखता था कि वो प्रार्थना करती थी, and this is before I met Guruji. So, or before even she met Guruji. So she used to pray very regularly, and I used to be very critical of her कि भाई क्या पूजा पाठ करते रहते हो, and उस समय मुझे समझ नहीं थी बिल्कुल भी, and I was a fool, so मेरे को समझ ही नहीं थी कि what is the significance and stuff like that. And तो अब आप ये देखिए कि from that point to how the education happens, how Guruji
kind of gives you the learning and the divine knowledge and wisdom. I don't think that there is a time when I do not pray. As an I try to pray, and I really appreciate, and we must all make time to pray. So prayers का बहुत बड़ा meaning है, and गुरुजी जब मदर मेरी प्रे करती थी तो never had any fragrance, and Guruji is so kind as to give us experiences of his fragrance, his presence. So what I'm trying to express is कि इतनी शक्ति कभी जिंदगी में हमारे को कभी महसूस नहीं हुई. Praying to doing prayers. So जब when Guruji came into our life, I guess everything changed and changes. So this is his greatness, that he भगत को constantly अपना indication किसी ना किसी रूप में गुरुजी देते रहते हैं, and it is on us to kind of realize it. Guruji कहते थे, I think a lot of people must have heard, Guruji कहते थे एडमिशन हो गया. So उस समय when I heard this, I did not understand कि क्या meaning है इसका, and it has a very very deep meaning. And Guruji wants us to learn and do self purification, soul purification. अपने गुरुजी कहते अपने भांडे में साफ करो, साफ करें, अपने भांडों में साफ करें. So means cleanse your soul, cleanse yourself, cleanse your karma, cleanse your thoughts. So it is very important, it is very meaningful. So what Guruji, when he was in body and even now, this is his prime guidance to us, I guess. So this is something I feel is very important. Guruji की हर बात में संगत जी, there is a deep meaning. हर word में, हर बात में, हर message में, हर teaching में. So I think nothing should be taken lightly, and I have we all have a kind of a learning curve, and I guess हर इंसान का अपनी अपनी learning की speed होती है. So I have gradually learned, obviously making a lot of mistakes, and but Guruji, आप गिरते हो, गुरुजी फिर संभालते हैं, फिर आप गिरते हो, फिर आप गलत करते हो, फिर गुरुजी फिर आपको संभालते हैं. So he's like a mother and father, and so but he should be his guidance should be taken very seriously, and it is very important to implement and follow it in our daily life actually. So anyway, one more thing I'll share. एक बार my mother had taken my sister to Guruji, and तो पहली बार जब लेके गए तो my sister has been a नास्तिक, मतलब that time तो काफी बदल गए. जब वो गुरुजी से मिले थे तब वो बिल्कुल भगवान में उनका कोई विश्वास नहीं था, पक्के नास्तिक she has been. And गुरुजी ने जैसे ही मेरी सिस्टर को देखा, गुरुजी ने कहा आओ नास्तिक. गुरुजी went on to say बहुत चंगी आत्मा है, so I was very very happy to hear that, since I know my sister as being a very kind and a sensitive human being. तो मुझे अंदर से बड़ी खुशी हुई और ये रियलाइज हुआ कि देखो गुरुजी कैन सी द सोल,
you know, um, even though the soul is an astic, which is so great and amazing. And Guruji gave in the first interaction his duties to my sister, and obviously that was a very, she didn't know what to do. Like he gave the duties, and she didn't know how great a blessing it is. So my mother kind of obviously told her to take it, and कितनी सुगंध उन जूतियों में से, मतलब I personally have, my God, it's intoxicating, and जितनी जितनी पूजा होती है उस वो और बढ़ती है. So the more prayers are done, the fragrance increases. So prayers are very important. Now I'll share my experiences post or after Guruji took Mahasamadhi. So जी 2009 में संगत जी I got very very sick. तो इतना sick हो गया था मैं कि I had मतलब I had all symptoms. I had vomiting, nausea, pain behind my eyes, stomach aches. I couldn't eat. I couldn't sleep. I had moving pains, headaches. All type of symptoms were there, and it was so bad. I couldn't work. I couldn't lead a normal life. Nothing. And I started visiting doctors, and खूब चक्कर लगाए जी, फला डॉक्टर इस हॉस्पिटल का, फला डॉक्टर उस हॉस्पिटल का, एंड विद एब्सोल्युटली नो आउटकम, एंड diagnostics after diagnostics after diagnostics, zero outcome. Nothing was getting diagnosed. Doctors could not help me at all. I became so bad that I was actually suicidal, and this continued on for about a year, and बहुत desperation हो गई. My family was very disturbed, and एक डॉक्टर ने कहा कि भाई आपका कुछ डायग्नोस तो हो नहीं रहा, आप ऐसा करो, दिमागी चेकअप करा लो, मीट अ साइकेट्रिस्ट. सो आपको कोई डायग्नोसिस तो हो नहीं रहा. तो मैं इतना डेस्परेट था, मैंने कहा हाँ जी हो सकता है मेरा दिमाग ही खराब हो गया हो, आई शुड गो टू अ साइकेट्रिस्ट. तो जी मैं साइकेट्रिस्ट के पास भी चला गया, एंड साइकेट्रिस्ट ने 2 मिनट मुझसे बोला कि जी क्या करते हो, स्ट्रेस्ड हो, ये दवाई खा लो. एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल, एंड आई वॉकड आउट ऑफ हिज आई वॉकड आउट ऑफ हिज क्लिनिक. संगत जी जैसे कोई पानी गिराता है ना सिर पे, ऐसे मेरे को गुरुजी की वो 2 लाइनें याद आई जो 2006 में गुरुजी ने मुझे वाइल ही वाज इन बॉडी बोली थी. तेनू पता है डॉक्टर ने सैनिक फार्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, तेनू पता है डॉक्टर ਨੂੰ कुछ नहीं आंदा. एंड आई रियलाइज माय गॉड what a big mistake I have been doing, and I immediately started doing Guruji's mantra jap and taking lota from jal from the lota. So I started taking that, and within 15 days everything was gone. Matlab, it was sheer miracle actually, and 15 days of mantra jap and jal from Guruji's lota, and the suffering of 1 year had disappeared. So this is what he had already seen it in 2006 that he was referring to at that time, which obviously I could not understand, and I understood it in 2009. So तब समझ में आया कि गुरु ने मेरे ऊपर कितनी कृपा करी और मुझे रास्ता दिखाया towards the right way to go. So this is one medical experience. Okay, once I was in bademandir,
and so I was very disturbed. So I had वहाँ पे शब्द चल रहा था. Now this is another satsang I'm sharing. So there was a shabad going on. तू मेरा पिता, तू मेरा माता, and so since I was very disturbed, I closed my eyes and मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ. तो मुझे मेरे को ऐसा हुआ कि जैसे मेरा माइंड ब्लैंक कर दिया हो किसी ने, और मेरे को आवाज आई ठेठ पंजाबी में, तू कुछा से परेशान है, मैं लखा से परेशान हाँ. लोग आंदे हैं, शब्द सुनते हैं, चले जाते हैं, कोई समझदा नहीं, कोई अमल नहीं करता. अपने घर शब्द चलाएं. So the meaning obviously is कि भाई you are disturbed with a few, I am disturbed with lakhs. People come, listen to Shabad, go back. No one understands and implements in their life. Play Shabad at your home. ठीक है जी. Anyway, मैंने आंखें खोली और मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे बोला गया है कुछ और मुझे गुरुजी ने बोला है. और देखिए मूर्खता किसे कहते हैं कि मैं वो रियलाइज करने के बाद ये बात भूल गया. आई फॉरगॉट अबाउट इट. एंड बात खत्म हो गई जी. आई टुक इट वेरी लाइटली. और एक दिन, दिस जस्ट आई थिंक मे बी फ्यू डेज, 4 or 5 days होगा, आई डोंट नो एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन. आफ्टर फ्यू डेज at 7 o'clock that I remember in the morning, there is a knock on my balcony door. Now my balcony faces a garden, and there is a window on one side of the door. So जी मैं नॉक हुई तो मैंने कहा कौन है, आवाज नहीं आई. फिर नॉक हुई, फिर मैंने कहा कौन है, फिर किसी ने जवाब नहीं दिया. फिर नॉक हुई तो मैं आई गॉट इरिटेटेड एंड आई गॉट अप एंड आई जो कर्टन था विंडो का साथ में डोर के, उसको हटाया और देखा जी कि बालकनी के अंदर एक मोर जो है वो दरवाजे को, हमारे इस रूम के दरवाजे को नॉक कर रहा है. सो जी एनीवे मेरे को समझ में आ गया, मुझे ये भी समझ में आ गया कि गुरुजी ने मुझे कहा था शब्द चलाई घर में, और मैंने प्रणाम किया मुंह को, और बहुत धीरे से मैंने वो दरवाजा खोला, और वो मोर जो है वो उड़ के यहाँ से, एंड इट सैट ऑन द गेट. मैं प्रणाम करता रहा और फिर वो मोर चले. बट आई रियलाइज कि गुरुजी कह रहे हैं शब्द चलाई. ठीक है जी. शब्द चलाना शुरू कर दिया. जैसे इंसान लाइटली लेता है, एंड आई ऑल्सो मेड माई मिस्टेक्स. कुछ दिन चलाया, उसके बाद फिर भूल गए. तो one day after, I guess maybe a month or so, I was passing through बंगला साहिब जी गुरुद्वारा, एंड मैंने कहा चलो, संडे का दिन था, मैंने कहा चलो 5 मिनट मत्था टेक लेते हैं. मैं अंदर गया, मत्था टेका, मैंने कहा चलो 5 मिनट बैठ लेते हैं. मैं बैठा. मैं जैसे ही बैठा, भाई जी कहते हैं जिस घर ਦੇ ਵਿੱਚ शब्द नहीं चलते वो शमशान है जी. सो मेरे तो जी रोना छूट गया वहां पे कि माय गॉड, व्हाट अ बैड थिंग आई एम डूइंग. एंड गुरुजी इज कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग मी कि भैया, यू नो, डू द राइट थिंग. एंड यू नो ऑब्वियसली फिर, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर विद यू इज कि देखिए, गुरु आपका हाथ पकड़ के रखते हैं, चाहे हम you know, in some way or the other, you know, in one form, in one, some sign or the other, some message or the other. So uh, you know, it is we are all very fortunate to have you know, Guruji in our lives. So this is one thing. और
Okay, another satsang I'll share. घर में एक बार सत्संग हो रहा था, एंड so I was meditating on Guruji, and गुरुजी ने मेरे को ठेठ पंजाबी में कहा कि सबनों प्यार करी, किसी से ना डरी. एंड I have been exactly opposite of that. And so Guruji wanted me to totally change this mindset, you know. And so I've been very judgmental, and maybe and fearful, of situations and things. So Guruji told me to implement this. Obviously, I have done my mistakes, and we all make mistakes, and so I'm implementing that in my life, and the level of implementation can go higher and higher. So anyway, so this is just a small communication. So Guruji, he communicates as in, and I want to talk about it maybe a little more about communicating with Guruji, and in maybe a little more detail. And so anyway, अभी हम आगे चलते हैं एक और. I want to share about another medical bit. So since about 5 years, I am again suffering with some similar undiagnosed symptoms. So this is another satsang I'm sharing, and so this is a reoccurrence of my medical, I guess, problem with similar symptoms. And since Guruji had already told me that doctor nu kuch nahi aanda, so I'm trying to follow, as in I'm following, not trying to follow, but I'm following. And I haven't seen a doctor in many years. And now I want to share this, that I totally believe that what Guruji has said is 10,000% accurate, and that there is so much of power. So why I'm sharing? I'm sharing that every time I listen to the shabads, the original shabads. So there are original shabads which are blessed by Guruji. So when I listen to these shabads, it works like a medicine on me, and I get the relief which somebody would get with a medicine. So Guruji ne ek din, I was putting bhog to him, and he said telepathically, he satsang kari. So satsang, so we kind of try to do satsang every week, and these shabads, as I said, that they have extreme powers, and Guruji has blessed them with powers. So they not only have the capability of purifying our body and soul, but also cure bodily problems and diseases. Same thing is true with Guruji's Jal Prasad and Guruji's Langar Prasad. So this is a personal experience I'm sharing, that with the Jal Prasad, the Langar Prasad, and the Shabads, very powerful medicine, more powerful than any medicine that I have had. And there are phases when I am unable to do, let's say, I'm unable to listen to shabads. जैसे हो जाता है कभी आप बिजी हो गए, 2 दिन आपने 3 दिन नहीं किया, हफ्ता नहीं किया, my problem starts increasing. So you see, very direct correlation between the cure and जो हमको ग्रहण करना है शब्द, लंगर प्रसाद, and also like to add the mantra jap. So mantra jap, संगत जी, very 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 powerful. गुरुजी ने हमको जो मंत्र दिया है, इसमें बहुत शक्ति है.
इसको बिल्कुल लाइटली ना लें। हम घंटों डॉक्टरों की लाइनों में खड़े रहते हैं, 2-2 3-3 घंटे हाथ जोड़ के। अगर हम मंत्र जाप को रेगुलरली 1 घंटा 2 घंटा एज मच एज यू कैन डू करें, यू विल सी अ डिफरेंस, एज has happened with me. And I told you I got cured in 2009 just by doing maybe 15-20 days of mantra jap. And so there is a lot of power, as in I do this and my problem starts finishing. And so please, my earnest request is, don't take it lightly. Please do the mantra jap, have put the water bhog jal before Guruji while doing mantra jap, and that jal will turn into medicine. And take that medicine, and it is far more powerful than any medicine that you can ever think of. So that is one more thing I wanted to share. Few lessons I want to kind of share with you, few learnings actually. And गुरुजी ने एक बार कहा था कि पढ़न लिखन से कुछ नहीं होता. So not that he doesn't want you to be educated, but what Guruji means is that the more important thing is getting to involve into the education that Guruji is trying to impart. जो गुरुजी एजुकेशन हमें देना चाहते हैं थ्रू गुरबानी, थ्रू डूइंग his following his footsteps, teaching his teachings, self purification, soul purification, good karma, bhande saaf karo, like, so these are all his directions and his teachings. So this is very important, and I think very important to take it very seriously, as इससे इंसान की बिल्कुल इंसान का जीवन बदल सकता है. So not to be taken lightly, I think. So एक मैं आपको बड़ा और इंटरेस्टिंग बताता हूँ. There was a phase when I started doubting Guruji due to my medical problem. अब देखिए कि इंसान कितना कमजोर होता है कि गुरुजी इंसान को थोड़ी सी तकलीफ हुई और इंसान हिलने लगता है, एंड गुरुजी ने मुझे, एंड दिस वाज अ वेरी स्मॉल फेज, मतलब कुछ दिनों की बात थी ये. एंड गुरुजी ने मुझे तुरंत जो है शिव पुराण पढ़ने का वो दिया, डायरेक्शन दिया. और आप देखिए, मैं जिस चैप्टर पे शिव पुराण में आया उसमें ये था कि लॉर्ड हिमावत और जो पार्वती माँ के फादर एंड मदर एंड लॉर्ड हिमावत एंड आई गेस मैना माता, सो दे started doubting Lord Shiva. So from having affection towards Lord Shiva to doubting them. And शिव पुराण में ये लिखा था, जो चैप्टर मैंने पढ़ा उस समय, दिस वाज इन इंग्लिश, जो गुरुजी की वेबसाइट पे भी है, gurujimaharaj.com, कि व्हेन यू डाउट, जब उन्होंने डाउट किया लॉर्ड शिवा पे, तो उनकी जो सेल्वेशन उन्हें मिलनी थी वो सेल्वेशन उनसे चली गई. एज इन सो आई इट वाज सच अ ग्रेट लर्निंग जो गुरुजी ने करवाई, कि never to doubt your guru, never to doubt him, because you lose your blessings, and and obviously he feels painful, so we love him, so we should have purity of love no matter what. So देखिए, ऐसे गुरुजी हमें गाइड करते हैं towards the right path, the right thinking. और हम कितने कमजोर हैं कि समस्याओं के अंदर डगमगाने लगते हैं, so anyway, so another thing which Guruji made me learn through Gurbani was very important, is that Guru is immaculate. Guru is immaculate. Immaculate का meaning है beyond perfection.
तो अब ये देखिए कि जब गुरु आपका इमैक्युलेट है, बियॉन्ड परफेक्शन है, एंड इफ वी आर गोइंग थ्रू सर्टन हार्डशिप्स इन लाइफ, you know, he is not at fault. It is our karma that we have to deal with, and we must realize this every time we face a hardship कि ये सब मेरा किया हुआ है ना, ये मेरा गुरु तो इतना प्यारा है और इतना 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 महान है कि he in spite of all my bad deeds of this life and the past lives, not only that he has adopted me, he has brought me into his sharan, that he continues to love me and guide me and uh, take away 90% of my suffering and just leaving 10% for me uh, to kind of deal with. तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट थिंकिंग है कि ये सच्चाई है जो कि गुरबानी में गुरुजी ने मुझे सिखाई। और गुरुजी ये कह रहे थे कि मैं 90% आपकी तकलीफें ले लेता हूँ, सिर्फ आपके लिए 10% छोड़ता हूँ। एंड वाइल गुरुजी वाज इन बॉडी, आई हैव लर्नड दैट गुरुजी हैड he take lot of other people's diseases and medical problems onto himself, and then he would through his prayers and part and powers kind of suffer and kind of get and kind of deal with it, but he would take away the suffering of the sangat and kind of be in pain. And so आप ये देखिए कि कितना प्यार गुरुजी हमसे करते हैं कि वो हमारे लिए तड़पते हैं और फिर भी जो है वो चाहते हैं कि हम खुश रहें, सुखी रहें, और हम थोड़ी सी कठिनाइयों के से भी हिल जाते हैं, और तो अपने गुरु पे कभी डाउट ना करें, not even 0.1%, and have बिल्कुल rock solid अटल विश्वास on our guru. So this is one thing which I've learned. Then गुरुजी हमारे को जैसे गुरबानी सुनवाते हैं, I am just trying to talk about गुरबानी because गुरुजी की यही एक बहुत बड़ी गाइडेंस है सबको कि, एंड ही टोल्ड मी दिस व्हेन, जब उन्होंने बोला कि संगत आंदी है, सुनदी है, चली जाती है, और समझदा कोई नहीं है, मतलब that he really wants us to implement the teachings of Gurbani and the Shabad of Guru into our lives, and and it is very important if we are wanting to kind of be his sangat, to follow that or to implement that, and make efforts to implement in daily life, so this is something which I think is very important. And गुरबानी में ये भी लिखा है कि गुरु के रास्ते पे चलना बहुत ही औखा होता है, and but I guess that's how it is, and this is so self purification, soul purification, and purifying one's thoughts, one's actions, one's words, and so that we can become fit to merge with the divine light, which is Guruji. So anyway, एक चीज मैं और शेयर करना चाहूंगा about गुरुजी कहते थे ध्यान लगाएं. So and this is a personal experience that I'm sharing कि if we really want, जब गुरुजी की इस बात को बहुत ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि गुरुजी बार बार कहते हैं ध्यान लगाएं, so and this is a very meditation on Guruji is a very important way to connect with Guruji and to get his guidance. And if people who are sincere and I have seen that I have had
and obviously it is his will. हमारी इच्छा नहीं हो सकती, इच्छा उनकी होगी, वो कब कैसे हमारे को गाइड करना चाहें. लेकिन अगर हम टाइम ही नहीं देंगे उनको ध्यान लगा के उनसे रिसीव करने का, तो वो कैसे हमको गाइड करेंगे. सो वन आई थिंक आई हैव लर्नड इज दैट गुरुजी हैज टॉट मी इज दैट यू डू योर बिट, यू अपना ध्यान लगाइए. मैं ध्यान मतलब आई एम ट्राइंग टू डू इट एज मच एज पॉसिबल, एंड देन एटलीस्ट गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू, और मैं क्या अपॉर्चुनिटी दूंगा, बट गिव हिम मीडियम टू so he can guide to guide us and give us the direction, since Guruji की communications telepathic बहुत होती हैं, and I have personally experienced, and it is all through ध्यान लगाना and meditation. So इतनी लाइफ के इम्पोर्टेंट कई बार डायरेक्शंस हम इंसान को चाहिए होते हैं, एंड वी सीक डायरेक्शन, और हम एंड अप करते हैं वही करना जो हम सोचते हैं कि सही है. बट आई गेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो गुरुज विल, कि गुरु की इच्छा क्या है, एंड वो गुरु की इच्छा सिर्फ ध्यान लगाने से ही समझ में आ सकती है ना. सो दिस आई हैव रियलाइज्ड, आई हैव लर्नड, एंड गुरुजी ने सिखाया है ये कि अगर गुरु की इच्छा समझनी है और तो गुरु पे ध्यान लगाओ, और वो इच्छा वह समझ में आएगी, है ना. वरना हम अपनी इच्छा से चीजें करते हैं, और फिर जब रिजल्ट आता है तो सोचते हैं गुरुजी अब आपके हाथ में है. तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग कि हम करते अपनी इच्छा से हैं, बट फिर रिजल्ट हम गुरुजी पे डाल देते हैं, विच आई थिंक इज नॉट अ फेयर थिंग, है ना. सो बहुत जरूरी है कि गुरुजी पे ध्यान लगाना, और उनको उनकी बातों को सीरियसली फॉलो करना. सो वन मोर, एक शब्द जो है वो गुरुजी की जो चलता है वो है सच सिमराए होवे परागस, सब सच सिमराए होवे परागस. सो the meaning of this is remembering the true Lord in meditation, one is enlightened. So so this is, I guess, is ये बहुत important है, and so I want to just kind of highlight it as part of Guruji's lesson to me. So ये है. बाकी शिव पुराण एक और मैं आपको शेयर करता हूँ कि शिव पुराण गुरुजी कहते थे पढ़ने के लिए, एंड आई हैव हैड मैसेजेस फ्रॉम some very old and senior Sangat members, and so Shiv Puran, autobiography of a yogi, laws of the spirit world, and so they are such divine books, they are divine granths actually, and Guruji has literally made it so easy that we get the nectar of divine wisdom and divine knowledge. एंड मतलब और मैं आपको एक बात बताता हूँ, शिव पुराण के अंदर तो आई थिंक हर एक चैप्टर के बाद ये लिखा हुआ है कि आपने अगर ये चैप्टर पढ़ लिया तो आपके इतने सिंस, आपके इतने पाप हट जाएंगे. सो जस्ट बाय रीडिंग, और गुरुजी आई हर्ड कहते थे कि दिस इज अ स्टोरी अबाउट मी, सो जस्ट बाय रीडिंग इट इंसान के और जो है वो पाप कट जाते हैं, एंड सो नॉट टू बी टेकन लाइटली, एंड वेरी वेरी इम्पोर्टेंट गाइडेंस टू फॉलो. सो ये है. बाकी जी शिव पुराण में ये भी लिखा है कि भाई गुरु आपका जो है वो शिव है और शिव ही गुरु है. सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू, एंड सो I had questions in my mind, who is Shiv and who is Guru, what is the difference? So I guess Shiv Puran answered that for me, and so very important, so to do that. So finally,
जो मेडिकल का पार्ट है, मैं आपको आई क्विकली रैप अप. जो आई हैव एक्सपीरियंस्ड hundreds of times, many times, that and I have full faith that doctors, although are doing a great service, but without the blessing or the kalyan of divinity of a sadguru, of God, the cure cannot happen. And prayers, mantra jap, shabad, uh, they have, langar prasad, jal prasad, they have tremendous power, more powerful than any medical science. So I cannot emphasize enough that, कि आज की दुनिया में इतनी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, एंड वी आर पीपल आर स्पेंडिंग ऑल टाइप ऑफ मनी एंड ऑल टाइप ऑफ टाइम. अगर इंसान इस वक्त को गुरुजी के साथ जाप करके और ध्यान लगा के और सच्चे दिल से गुजारे, तो आई फील कि वो इट इज मोर पावरफुल क्योर देन गोइंग टू एनी डॉक्टर or using any type of medical science. This is my personal experience, which Guruji has given me over and over and over again. So this is very important. And ये तो हो गई हमारी bodily cure की बात. थोड़ी सी मैं सिर्फ I just want to share about कई बार मैं सोचता हूँ कि भाई what will make Guruji happy, and then the answer comes is that the more I purify myself, I purify my soul, and become worthy of being his Sangat, and and worthy of since he is divine light, and become worthy of merging into divine light. So so I guess that's what will make him more happy or happy, and so I guess and I want to follow his will, and उनकी will meditation से ही समझ में आएगी. तो अगर मैं सबको यही अपने आप को भी बोलता हूँ, एंड आई शेयर दिस क्वाइट अ लॉट, कि भाई भगवान की विल पे चलना बहुत जरूरी है, और उसकी विल पे को के ऊपर सरेंडर करना बहुत जरूरी है. एंड अगेन surrender is a small word, big meaning, but I guess विल को जानना और उसके बाद उस विल पे सरेंडर करना, irrespective of one's difficult circumstances, and doing it happily. इंसान की बहुत तकलीफें होती हैं, एंड बहुत सारी तकलीफों के थ्रू one passes, but important to realize his will, and whatever is the circumstance, knowing that Guruji knows about it, and be contented and staying happy in those circumstances is, I guess, following Guruji, and obviously trying to listen to him and follow his direction and path. I guess we are all very, very, very blessed that we are under his cover, and मतलब इसको lightly नहीं लेना चाहिए. This is what I have learned, and उन्होंने हमारे को एडमिशन दे दिया, लेकिन उस एडमिशन का हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हाउ वी फेयर इन दैट एडमिशन, है ना, इन गुरुजी's पाठशाला, in his learnings that he is giving us, that fearing or that thing depends on us. So I feel we are all very, very blessed. And जैसे वो कबीर दास जी की एक बड़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, says, जो मंदिर में भी आई हैव हर्ड, कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान. So even if we give our head away and get a guru, I guess it's a great
It's a great deal. So Guruji is Mahashiv, and he is so loving, he is so caring, and even though we are unworthy of his love, he still showers us with his love and care, and he is constantly guiding. We just have to listen. You know, Jai Guruji.